एक तत्व है सभ्य समाज का जो आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड है गवर्नमेंट के साथ. एंड इफ यू लुक एट गवर्नमेंट एक्शंस अगेंस्ट civil society players, they have primarily been against those who are operating in the rights framework. हाँ, मैं नहीं मानती कि भारत के अंदर आज लोग अपनी बात मानने के लिए आज़ाद हैं, और जो सीरियसली बोल रहा है उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया जा रहा है, उसके ऊपर उनके एनकाउंटर कर दिए जा रहे हैं, उसके ऊपर जानलेवा हमले करवा दिए जा रहे हैं, उसको बहुत बुरे तरीके जलील कर दिया जा रहा है, उनके संगठनों को बैन कर दिया जा रहा है. The problem is that the government has created a certain narrative, has created a structure for us, and we are, some of us forced to, or some of us out of choice, feel that we have to speak in that language within that framework. I think that we have to also recognize our own hypocrisy in this process by not standing up, and we have to stand up for the person who's in a village who's standing up, because for him or her it's very, very difficult to do it. It's also important that you stand up for Oxfam. It's also important that you stand up for Nodeep. That is what we have to do. Journalists never speak up for journalists today. I'm talking about the vast majority who are in the mainstream media. Today, if a journalist is jailed by the government, you would have the rest of the media cheerleading that. And that is the unfortunate situation that we are in. The democracy in our country has been limited to elections, and that in itself is a great indicator, is a big indicator of the shrinking of civil spaces. Most television channels, newspapers, there is no hope. It's beyond redemption. I don't think it's going to change because of the complete corporate consolidation. सरकार जो भी आएगी, कल किसी और की सरकार आएगी, ये लोग उनके साथ रहेंगे. Thank you, Media Rumble, for inviting me and particularly organizing this conversation. I think this is certainly one of the most important conversations for all of us. It in many ways reflects, as a political scientist, I can say the state of civil society reflects the health of democracy. So that's what we're going to be discussing. But let me just say, let me talk of three specific instances just to set the context. And I'm sure all of us are aware of it. And we've just heard about what Safoora went through. But just to remind us, I'm sure everybody here knows Stan Swamy and what happened with Stan Swamy. We lost Stan Swamy, and he was one of the foremost Adivasi rights activist, and I just wanted to take you back to Stan Swamy. The second, which certainly has not been so much in the news, but I hope friends here did read, that I think it was 2 months ago when in Gujarat, they started saying that Narmada Bachao Andolan has been essentially doing money laundering and has indulged in corrupt practices. I'm somebody who's grown up in Madhya Pradesh, and Narmada Bachao Andolan, I would say, has been, at least for me, one of the biggest inspirations of post-independence India. And the third, which is again a very well-known case, this was probably 3 months ago, that we had Amnesty International being now fined few million rupees. The former executive director, Akar Patel, individually being fined 6 or 8 crores. And there are cases of CBI, PMLA, I assume income tax, etc., against Amnesty. And Amnesty has been shut down. Just to remind us, Amnesty is an entity which has won the Nobel Peace Prize. It is that entity which Lal Krishna Advani, don't be surprised, spoke in favor of. And Amnesty, to my friends outside, when I talk of Amnesty going through all this trouble, they say that Amnesty could be accused of many other things, but it's a joke that you would say Amnesty has been doing money laundering. That's the civic society, the civil society
space, the shrinking civic space in this country. But let me just, before I move on to the very, very interesting panelist here, मैं साथ में मुझे ये भी कहा गया था कि इसको दोनों भाषाओं में रखें. मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि जिसकी बात मैंने आज सुबह की थी, जो हम अथॉरिटेरियनिज्म देख रहे हैं, मेजॉरिटेरियनिज्म देख रहे हैं, उसका सही मायने में विरोध, बुनियादी विरोध जो है सिविल सोसाइटी से ही आया है. आई हैव नॉट सीन द पॉलिटिकल ऑपोजिशन एक्चुअली चैलेंज the hegemony of the majoritarian politics that we are seeing. It's, let's just remember, whether it's the farmers' protest, and Nodeep is here, we'll talk about it, whether it's the NRCCA protest, or whether we look at even the students' protest, which started with the Film and Television Institute, moved on to BHU, to Jamia, Jawaharlal Nehru University. You've seen the protest and the challenge to this majoritarian imagination of India coming essentially from civil society. So that's the context that I wanted to set. And my proposal is to my panelists that we do this in 2 rounds. I'll have some specific questions, but let's do the first round. And then we'll move on to questions from the audience. इस पहले राउंड में प्रयास हम करते हैं कि आप लोगों से सुने, आप लोग इस सिविल सोसाइटी, सिविक स्पेस का किस तरह से आकलन करते हैं, आप कहाँ देख रहे हैं, किस तरह के खतरे मंडरा रहे हैं, क्या ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं. तो मैं शुरू आपसे करने वाला हूँ. विराज, आप बताएं. Shukriya, Amitabh. And just to use this opportunity for a few minutes to frame the issues that we are facing today. एक छोटी सी असहमति आपसे कि आप कह रहे हैं कि सिविक स्पेस या सिविल सोसाइटी का स्पेस श्रिंक हो रहा है. मेरे हिसाब से किसी भी सामाजिक कार्य का, समाज का ही एक तरह से स्पेस श्रिंक हो रहा है. और ये केवल भारत में ही नहीं, लेकिन हमने देखा है कि विश्व भर में एक आइडियोलॉजिकल मेल्टडाउन मोमेंट पिछले कुछ दौर से चले आ रहा है. आप यूएस देख लीजिए, यूके में जो हो रहा है देख लीजिए, ब्रेक्सिट के बाद आप हंगरी, पोलैंड, चीन और रूस की तो बात ही अलग है. लेकिन उन देशों में भी जिनको हम प्रगतिशील मानते थे, द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल वाज सेट टुवर्ड्स ह्यूमन राइट्स, लिबरल फ्रेमवर्क, दैट इज़ नाउ कोलैप्सिंग एंड दैट्स समथिंग दैट वी मस्ट रिकग्नाइज. दूसरी असहमति ये कि सभ्य समाज में सबके लिए बराबरी स्पेस श्रिंक नहीं हो रहा है. हमें ये भी मानना पड़ेगा कि एक तत्व है सभ्य समाज का जो आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड है गवर्नमेंट के साथ, या उनके चेयर लीडर्स हैं, उनके लिए स्पेस ही स्पेस है. एंड इफ यू लुक एट गवर्नमेंट एक्शंस अगेंस्ट सिविल सोसाइटी प्लेयर्स, दे हैव प्राइमरीली बीन अगेंस्ट दोज हु आर इन द ऑपरेटिंग इन द राइट्स फ्रेमवर्क. कि हम जो मान के चल रहे थे कि संवैधानिक मूल्यों पे देश को आगे बढ़ाना है, हक और अधिकार की बात करनी है, चाहे वो भोजन की अधिकार हो, या चाहे वो सिविल लिबर्टीज़ हो, या स्वास्थ्य का अधिकार हो. इन संस्थाओं और संगठनों पे खास फोकस रहा है सरकार का. और अगर आप ट्रेंड देखें तो आई थिंक मीडिया एज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर सिविक स्पेस, द इंस्ट्रूमेंट्स हैव प्रीटी मच बीन द सेम. हम देख रहे हैं कि वही इनकम टैक्स, वही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, ये एजेंसीज का जो दुरुपयोग हो रहा है राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ, वो मीडिया के खिलाफ के लोगों के खिलाफ भी हो रहा है, वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ भी हो रहा है, वो एक्टिविस्ट के खिलाफ भी हो रहा है, और बहुत इंडस्ट्रियल स्केल पे हो रहा है. और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जिस स्पेस में मैं काम करता हूँ, वी हैव नेवर हैड इट ईजी. पिछले 75 साल में जितनी भी चुनौतियाँ आई हैं, वो चाहे कोई भी सरकार रही हो, वो चुनौतियाँ आई हैं. और जो कानून हमारे खिलाफ आज इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो FCRA का कानून हो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट हो, या फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेट्रीब्यूशन एक्ट कहना चाहिए इसे, जिस तरह इसका इस्तेमाल हो रहा है, ये आज के कानून नहीं हैं. ये 70-75 के दौर के कानून हैं, पुराने कानून हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल एक इंडस्ट्रियल स्केल पे आज हो रहा है. इतनी बड़ी तादाद में इतने लोगों के खिलाफ ये एक्शन नहीं हुआ था कभी. अगर FCRA को ही ले लें, आज करीबन 8-9 हज़ार संस्थाएं ऐसी हैं जिनका बिजनेस कंटिन्यूटी खतरे में है, क्योंकि द गवर्नमेंट इज़ नॉट इवन एबल टू डील विद द नंबर ऑफ
applications that have gone up, which are pending before it for renewal of licenses. We have seen in the case of Oxfam and others where the non-renewal has been done on completely frivolous grounds. For instance, saying that Oxfam is not acting in public interest. अगर आप एमनेस्टी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज नहीं लगा सकते हैं, तो ऑक्सफैम के खिलाफ पब्लिक इंटरेस्ट की आप समाज के हित में नहीं है, ये कहना भी हास्यास्पद है एक तरह से. तो जो जस्टिफिकेशन दी जाती है, दैट्स कंप्लीटली. सो आई वुड से दैट वी नीड टू फ्रेम द क्वेश्चन ब्रॉडर. This is an ideological project that is being pursued. This is being pursued at the cost of constitutional values. This is about the future of India. It's not about the future of a few NGOs, institutions, or players in the media. This is about the vision that our founding, the people who founded the independent republic, who fought for our freedom, gave us our constitution. So it is a clash of ideas, and how we resolve it will determine what the future of this country will be. So I would frame it much broader rather than just in terms of institutional civic space. Sure. So thank you, Biraj, and thank you for the personal endorsement of our work, of what we do as Oxfam. और हिंदी अंग्रेज़ी बोलने में कभी कभी समस्याएं होती हैं. कभी कभी जब सिविल सोसाइटी का जिस कॉन्टेक्स्ट में बिराज कह रहे थे हिंदी अनुवाद सभ्य समाज हो जाए, तो थोड़ी समस्या होती है. उसके लिए नागरिक समाज शायद बेहतर होगा. तो anyways, pun intended. So let me just move on. I agree with you, Biraj, and तो नौदीप से सुनते हैं, अगर आप बता सकें कि क्योंकि ये कह रहे हैं कि मसला सिर्फ सिविल सोसाइटी का नहीं है, और मैं भी जिस तरह से देख रहा हूँ वो मसला सिविल सोसाइटी का नहीं है. जैसे मैंने शुरू किया कि ये डेमोक्रेसी की श्रिंक होने का, बैकस्लाइड का है. तो आप कैसे देख रही हैं इसे? डेमोक्रेसी, मुझे नहीं लगता कि भारत के अंदर अभी लोकतंत्र है. मतलब हम लोग बोलते हैं कि लोकतंत्र के लिए 4 स्तंभ हैं. पहले विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और मीडिया है. और चारों को चारों बिल्कुल ख़त्म है. विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना, और उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो कानून बना रहे वो जनता के हित में होंगे. उसके खिलाफ कोई, जनता के खिलाफ या किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई शोषण नहीं होगा. अभी जितने भी कानून आए हैं वो जनता के खिलाफ ही आए हैं. कार्यपालिका का काम होता है उसको लागू करना और उसको सही तरीके से लागू करना, ताकि जनता के अंदर वो सही तरीके से काम करे. वो भी ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है. न्यायपालिका का काम है कि जो कानून बना है उस कानून को लागू करते हुए अगर उसी कोई उल्लंघना करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और कोई शक्ति के आधार पे कानून को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता है. ये न्यायपालिका का काम है. फिर मीडिया है कि ये तीनों अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये मीडिया का काम है. और वो मीडिया जो है, जो आज तक है, जी न्यूज़ है, हम लोग देख पा रहे हैं कि वो जो टीवी के ऊपर आने वाले सारे के सारे मीडिया चैनल जो हैं वो पूंजीपतियों की दलाली कर रहे हैं, वो सरकार की दलाली करते हैं, वो बस मोदी रचते रहते हैं. मतलब वो लोग तो दलाल हो चुके हैं. तो हम लोग किस तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है? तो डेमोक्रेसी तो नहीं बोलना चाहिए. तो ये कानून जो है वो जितने भी आए हैं, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो जिसके अंदर हिस्ट्री ख़त्म कर दी गई कि हमारी हिस्ट्री क्या है, उसके अंदर चाहे लेबर कोड हो जिसके अंदर मजदूरों के राइट छीन लिए गए कि 8 घंटे काम आपको 12 घंटे करना पड़ेगा, आप यूनियन नहीं बना सकते हैं. चाहे वो छत्तीसगढ़ के अंदर जो लोग लड़ रहे हैं अपनी जल जंगल ज़मीन के लिए, उसके खिलाफ जो ऑपरेशन समाधान प्रहार हो, चाहे वो CNRC हो, अल्पसंख्यकों के खिलाफ कानून हो, चाहे वो जब कृषि कानून आते हैं उसके खिलाफ में जब किसान अपनी आवाज़ उठाते हैं तब उनको खालिस्तानी बोला जाता है, तब इनको बोला जाता है तो आतंकवादी हैं. मतलब जनता जो नहीं चाह रही वो करना है, जो जनता चाह रही है वो गलत है. मेरे ऊपर बहुत सारे टैग लगाए जाते हैं कि देखिए ये तो पता नहीं क्या है, जनता को भड़काने वाले लोग हैं. मतलब मैं नहीं मानती कि भारत के अंदर आज लोग अपनी बात मानने के लिए आज़ाद हैं. तो कोई भी आज़ाद नहीं है. और ये जो सारा कुछ चल रहा है, ये सारा कुछ बड़े पूंजीपतियों और बड़े साम्राज्यवाद की दलाली करने वाले लोगों के लिए, लोगों के हित में चल रहा है, और कोई भी जनता के हित में काम नहीं कर रहा है. और जो सीरियसली बोल रहा है उसके ऊपर UAPA लगा दिया जा रहा है, उसके ऊपर उनके एनकाउंटर कर दिए जा रहे हैं, उसके ऊपर जानलेवा हमले करवा दिए जा रहे हैं, उसको बहुत बुरे तरीके जलील कर दिया जा रहा है, उनके संगठनों को बैन कर दिया जा रहा है.
तो मैं तो यही बोलूँगी कि मैं इसके अलावा और कुछ नहीं बोल सकती, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, बस बात ये है कि कौन इसको बोल रहा है। शुक्रिया। सफूरा, अगर आप मतलब इनसे बहुत सहमति है मेरी कि ये जो असॉल्ट है ये अंततः डेमोक्रेसी पर है, और जो भी विरोध में बोलता है, एक तरह से बिराज भी वही कह रहे थे जो उन्होंने कहा कि आप अगर सर्विस डिलीवरी आज कर रहे हैं तो शायद आपके लिए ठीक है, स्वच्छ भारत में कुछ और टॉयलेट्स का निर्माण करें तो आपको शायद सरकार से भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे। लेकिन अगर जिसको हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, या हम जो कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी का सवाल, सरकार की जवाबदेही का सवाल, वह अगर हम करते हैं तो लगातार फिर रिप्रेशन होता है, असॉल्ट होता है। और आपका अनुभव रहा है कि सिर्फ सरकार की जवाबदेही किसी कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं थी, पर बुनियादी जो हमारा आर्किटेक्चर है उसको बदलने के लिए आपने जो संघर्ष किया, तो आप कैसे देखती हैं अपने अनुभव से? Amitabh, thank you for this question. उससे पहले, before we begin, you were talking about Stan Swami, and we lost him, right? Today, and आज के ज़माने में अगर अब हम एक और केस को देखें जो कि अतीकुर रहमान का केस है, who is lying half paralyzed in jail and not getting any medical care properly. And, his family is running from pillar to post. He is not being even heard nowhere, even in the society, or even, jo bhi tareekh mil rahi hai court se. It's so delayed that, we don't know whether it's even going to have the desired effect that it should have. So the problem is why nobody is also talking about it, The problem is that the government has created a certain narrative, has created a structure for us, and we are, some of us forced to, or some of us out of choice, feel that we have to speak in that language within that framework, and that is the biggest reason for shrinking of the civic space, that we are not able to choose the language in which we want to speak. That language itself is has been restricted. When we talk about civic space, and Biraj was saying Sabya Samaj, and you were saying Nagrik Samaj, as a student of sociology, I would say I would not include those people in the civic space who are collaborators, who spread hate on the ground, and who perpetuate the government's propaganda. So in that sense, I strongly feel that the civic space is shrinking. The civic space, it's not like the civil society organizations or the actors, they are alone responsible for, or they are the only ones, taking the mantle forward. I feel that they are leading, right? And there are people who are behind them who believe in their work and in their efforts. I feel that that space is also increasing, is also, diminishing. This has been done in a very, very systematic manner, and, just Nodeep also talked about how it is not, she wouldn't call India a democracy anymore. And, this is reflected in the world indexes on, democracy in India. Like, there is constant downgrading of, religious freedom in India, the freedom of press in India, increasing attacks on the journalists, the VDEM report. We are a partly free country. We are an electoral democracy. That means the democracy in our country has been limited to elections, and that in itself is a great indicator, is a big indicator of the shrinking of civil spaces. Now, when we talk about how this has happened systematically, specifically, it's happening all over the world, but specifically in the case of India, we see that
there has been put in place a repressive institutional mechanism by way of draconian laws like the UAPA, like the PSA, like the NSA, and also, the FCRA and all of these rules, which are making it increasingly difficult for civil society organizations to even function and sustain their work. And, recent so-called surveys on civil society organizations and shutting down of international, advocacy groups such as the Amnesty are clear indicators of this. On a more, I would say, on a more societal front, or on a more fundamental front, how civil society has been diminished is through hate speech, through propaganda, which has been perpetuated by the news media in India. How slowly and steadily work of civil society is being discredited. How dissidents, farmers हैं तो खालिस्तानी बोल दो, मुसलमान हैं तो पाकिस्तानी या terrorist बोल दो, कोई भी अगर आपसे एग्री नहीं करता या आपके खिलाफ बोलता है तो आप उसको एक एंटी नेशनल एलिमेंट में फ्रेम कर दो, even so that even climate activists, are being framed in that narrative. And how important is climate action for, the world today? I cannot emphasize it more. But all of this again points to this has led to the degradation of the civic space in the country. Okay, thank you. आप क्लाइमेट एक्टिविस्ट की बात कर रही थी तो मुझे दिशा रवि याद आई, और यहाँ सब साथी ज़रूर कभी ना कभी किसी न किसी तरह से टूल किट का इस्तेमाल करते होंगे. ख़तरनाक शब्द है वो टूल किट. और दूसरा आपने जो कहा, वीडैम ने इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी नहीं, उसे इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी कर दिया है. I think that's important that we have slided to electoral autocracy according to the VDAM Institute. So, Suroor, आप lawyer हैं, आप मानवाधिकारों के सवालों पर भी काम करती हैं. So, how do you look at this? Thank you, Amitabh. I'll mix language. जी. मुझे लगता है आप तीनों ने बहुत ज़रूरी सवाल उठा दिए हैं. आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस मुझसे ज़्यादा रिच हैं, एंड आप लोगों के साथ जो घटा है, आई डोंट थिंक वी कैन स्टैंड हियर एंड से दैट civic society exists because आप लोगों के साथ जो घटा है happens to a lot of people every day. What I just wanted to say, a couple of things in addition. I think that there is a systematic action by the state, which Safoora referred to, which is delegitimization first. कि आप पहले कहेंगे कि जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन 40 साल पुराना काम है, लोग कम्युनिटीज़ उसके साथ जुड़ी हुई थी, पर सडनली आप उसका डीलेजिटिमाइजेशन प्रोसेस शुरू करते हैं. फिर आप एक मिथ क्रिएट करते हैं कि वो पीएमएलए के साथ इन्वॉल्व हैं. फिर आप लॉ को लेके आते हैं, आप फिर ईडी भेजेंगे, आप इनकम टैक्स को भेजेंगे टू फर्दर fulfill that prophecy that you're creating the myth around civil society, that ये सारे corrupt हैं, सारे खराब हैं. And then when you do that, then you allow arresting, you allow detentions, you allow all of that, and let it slide for the next hot topic issue to come up. And जब आज, while we were waiting for this, GN Sai Baba has been released by the Bombay High Court, and they said immediate release because of his health. Now, that has happened after 5 years and many more years of detention for him. And there'll be no conversation, there'll be no accountability of which news channels named him an Naxal, which news channels, which were the people that actively participated in his witch hunt. And they will go on as if today never occurred. And GN Sai Baba's entire life has gone, his family's life is gone. And these are people who at least have social power. We have so many ground level RTI activists, so many human rights activists, so many community workers who are currently either have been detained, arrested, beaten up, violated, just because they do not have the social power and privilege that the four of us sitting here now have.
And I think that has to be recognized, that this is a matter of privilege. The other thing that I'd like to say, that this has not happened, this is a slow slide that has dramatically sort of, we've reached that point where the plateau suddenly fallen. But when this was happening to tribal activists, when this was happening to people in Kashmir, when this was happening to people in the Northeast, we chose not to talk about it because it wasn't mainstream. But now that it's happening in Delhi offices and it's happening to people like me, I am suddenly very worried about what does it mean to be arrested under NSA, PMLA, and other. So I think that we have to also recognize our own hypocrisy in this process by not standing up, and we have to stand up for the person who's in a village who's standing up, because for him or her it's very, very difficult to do it. It's also important that you stand up for Oxfam. It's also important that you stand up for Nodeep. That is what we have to do. And civil society spaces will only shrink if we allow civil society that exists to let it shrink. If we are not going to stand up as people for NRC, CA protests, we are not going to stand up with farmers, we are not going to have those people standing up. This cannot be done by few people sitting there and saying, we are civil society and we are going to lead protests. Protest, accountability can only happen when we are involved in that process every day, asking the questions, asking for accountability, not just from the government, but also from ourselves. Have we done that little bit extra today? Have we registered our protest today? Let's not wait for it to happen to Nodeep and then say, oh, Nodeep arrest ho gayi, oh, Suroor arrest ho gayi, oh, terrible thing to happen to Safoora. No, you should have done it when Safoora was being questioned. You should do it when, go answer to that troll and support that person if you cannot do anything else. That's, I think, on us. As far as the law is concerned, it's been made more draconian over time. And it's the use of the law, as Biraj was saying, that the industrial use of the law. But it's very interesting because even they know it, that it's not going to stand the scrutiny before a non-biased judge. And the sad or the good part is that we talk about the fact that the judiciary is collapsing, but you still have individual sort of lights that will suddenly spark and say, you know, I will give this person bail, and I'm a CJM sitting somewhere in a small district. I am a High Court judge or I'm a Supreme Court judge, and I will make it count. These are powerful voices, but sadly they're not institutional voices. And we have to ask ourselves why we have let our institutions sink to this level, where we don't have systems that look at progressive, powerful voices to be part of the system, rather than having governments decide who is going to be there. थैंक यू सुरूर। और आपने जो मैं सेकंड राउंड करना चाहता था उस तरफ आप ऑलरेडी बात बढ़ा रही हैं कि इस परिस्थिति में किया क्या जा सकता है, पर उसके पहले आप जो कह रही थी मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। और सुबह के सत्र में भी मैं कह रहा था कि हमको अपने अंदर भी झांकने की ज़रूरत है। तो सुरूर, आपने जैसे कहा, मेरा एक अनुभव है कि आज से करीब 10 बरस पहले मैं एक पैनल कर रहा था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, और उसमें मेरे साथ 2 उस समय के कैबिनेट मंत्री थे, और मुझे करीब 15-20 मिनट मिला था जिसमें मैंने बहुत कुछ उस समय की सरकार के ख़िलाफ़ बोला। और तब मुझ बस्तर से वहाँ कुछ एक्टिविस्ट साथी आए थे और उन्होंने आके कहा कि आप ये IIC में तो बोल लेते हैं, आप हमारे यहाँ के थानेदार के आग के सामने थोड़ा कुछ बोल के दिखाइए ऐसा। तो ये सही है, ये सवाल कई लोग उठाते हैं कि हम लोगों ने क्यों, जब ये IIC, हैबिटेट सेंटर और जंतर मंतर के आसपास जब इस तरह का दमन शुरू हुआ तब इतना बोलना शुरू किया। दमन का एक इतिहास है और उस इतिहास के साथ कितने लोग खड़े थे वो भी सवाल है। Although I also agree with Biraj that it's really now a different paradigm. It's an industrial level that we have reached. And I just also wanted to say that, sorry, I'm again and again referring to the morning session, but I must say, to acknowledge what Biraj and colleagues are doing at NFI, और मैं उससे जोड़ना चाहता हूँ कि NFI के ज़रिए वो लोग मीडिया फेलोशिप्स कर रहे हैं, और वो एसेंशली ऐसी मीडिया फेलोशिप्स कर रहे हैं जो न्यूज़ रूम की डाइवर्सिटी बढ़ा सकें, और उन्होंने काफ़ी मेहनत से उसको किया है, तो उसके लिए NFI को बधाई। पर मैं साथ में चाहता हूँ बिराज ये भी बताएं कि
मीडिया की इसमें क्या भूमिका रही है पूरे श्रिंकिंग सिविक स्पेस में, डेमोक्रेसी पे जो असॉल्ट हो रहा है उस पर? So how do you look at, so I have two questions for pretty much all of you. Is one, मीडिया की क्या भूमिका रही है, हम मीडिया रंबल में हैं तो, और दूसरा, क्या दो तीन ठोस कदम हो सकते हैं हम सब के लिए? So I'll break it up into two parts. But first, let me say that Indian journalism is alive and it is thriving. But the Indian media is dead, and it has long been dead. And it is time to acknowledge this, that the Indian media died when the corporate takeover of the Indian media was completed a few years back. Today, the capitalist class controls the entire Indian media. It is owned by the Adanis and Ambanis of the world. You have a situation of complete monopolization, which is unprecedented. I think the only country where I used to be a frequent visitor to Brazil, and one of the things I used to tell audiences there a few years ago, that the worst thing that has happened to Brazil is the consolidation of the media with a few corporates. And I used to praise the diversity of the Indian media. Today, that's gone. And I think, so let's acknowledge that. That yes, there are some independent, free-spirited, public-minded media outlets, and there are thousands of journalists, many of whom won't be journalists for very long if they continue to do the good work that they're doing. There are thousands of good journalists across the country. So that's number one. Second, media is very much therefore part of the problem. Why will a media house ever act against the interests of its owners? If your owner wants, to support the government or is supportive of the government because their business interests are tied to it, why would they oppose it? So therefore, let's also acknowledge that a vast part of the Indian media is today not just complicit, but an active player in the shrinking of this space. Most importantly, for themselves. Journalists never speak up for journalists today. And I'm talking about the vast majority who are in the mainstream media. Today, if a journalist is jailed by the government, you would have the rest of the media cheerleading that. And that is the unfortunate situation that we are in. This government declared journalism and media as an essential service during COVID. Media houses followed that up by sacking 3,000 journalists, taking the excuse of COVID. And this did not make it as a story in any of the newspapers in the mainstream media in the way that it should have. And no, there were no protests. There was just people losing their jobs. And the owners got away by saying that, look, this is restructuring, this is voluntary retirement, this isn't a sacking. And in fact, the media fellowship, we gave about 200 media fellowships. It came about because we felt that we should support independent journalists, particularly those from diverse backgrounds in this process. And we've done about, by January next year, we would have given out about 200 fellowships to do that. So I think that's one important. What can we do? हम क्या कर सकते हैं? जो सबसे बड़ी कमी हमारे देश में है कि हमारे पास independent public broadcaster नहीं है. आप बाकी मीडिया को भूल जाइए. I think it is beyond redemption. We can kiss it goodbye. Most television channels, newspapers, there is no hope. It's beyond redemption. I don't think it's going to change because of the complete corporate consolidation. सरकार जो भी आएगी, कल किसी और की सरकार आएगी, ये लोग उनके साथ रहेंगे क्योंकि बिजनेस इंटरेस्ट और सरकार ये जो है बहुत क्लोजली टाइड अप होते हैं. सो आई थिंक द रोल ऑफ द पब्लिक ब्रॉडकास्टर, हमें नागरिक के हिसाब से ये देखना पड़ेगा कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर जो है हमारा इंडिपेंडेंट हो. व्हाई इज इट दैट इन 75 years वी हैव नॉट बीन एबल टू क्रिएट अ BBC और a ABC और a Canadian Broadcasting Corporation? Why is it that our public broadcaster reports to a ministry, to a government? And even while doing so, आज की तारीख में ये कहता हूँ, आप जितना भी दूरदर्शन को बोलिए, if you look at any private news channel and you look at Doordarshan, you will still see a sense of moderation in Doordarshan. They are not actively egging on egregious violence against minorities like many of our private channels are doing on a minute-to-minute basis. They may not be taking anti-government stories. So I think we have to re-examine the role of a public broadcaster. We need legislation to break the media monopoly. भाई हर देश में इस तरह की legislations हैं जहां आप मीडिया मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए आप यू डोंट अलाउ कॉर्पोरेट टेकओवर्स. आप देखिए कि रूपर्ट मर्डॉक को अपनी नेशनैलिटी 2 बार बदलनी पड़ी. उन्हें यूके की सिटीजनशिप लेनी पड़ी, फिर अमेरिका की सिटीजनशिप लेनी पड़ी बिकॉज ही वांटेड टू एंटर द मीडिया स्पेस देयर. ही वाज नॉट अलाउड टू बाय
companies beyond a point because of their own versions of non-cartelization of the media. So ये 2 points, legislation to curb, to break the private monopoly, and a strong public broadcaster are pretty much the 2 things by which we can still perhaps save a part of the Indian media. शुक्रिया बिराज। नवदीप, आप बताएं, क्योंकि पूरे फार्मर्स प्रोटेस्ट में एक ऑल्टरनेटिव मीडिया भी खड़ा किया था आप लोगों ने, और उससे बहुत ऊर्जा भी आंदोलन को तो ज़रूर मिली और बाहर के आंदोलनों को भी मिली। तो आप कैसे देख रही हैं मीडिया का स्वरूप इस पूरे सवाल में? बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुल के बात होने की ज़रूरत थी। तो मैं अपने तरीके, जैसे मुझे जो समझ में आया किसान आंदोलन के दौरान या उससे पहले भी, कि मतलब जब भी कोई आंदोलन हुआ, जब भी किसी ने आवाज़ उठाई, उसको बहुत बुरे तरीके जलील किया गया। जितने भी मीडिया चैनल हैं, मतलब बड़े मीडिया चैनल, तो उसकी टक्कर में जब कुछ छोटा मीडिया चैनल खड़े होते हैं तो उन्होंने जनता तक ग्राउंड में जाके आवाज़ पहुंचाई है और फिर वो जीते भी हैं। चाहे वो आज न्यूज़ लॉन्ड्री ही हो, चाहे वो एनडीटीवी हो, चाहे वो छोटे मोटे गाँव सवेरा, जैसे मनदीप पुनिया ने एक नया चैनल शुरू किया गाँव सवेरा जैसा चैनल हो, चाहे वो किसान आंदोलन के अंदर ट्रॉली टाइम्स शुरू होते हैं। क्योंकि किसान आंदोलन जब होता है तो बहुत ज़्यादा बदनाम किया जाता है कि देखो ये तो खालिस्तानी है, यहाँ पे तो शराब पी जाती है, यहाँ पे तो औरतें ऐसी तरीके से आ रही हैं, यहाँ पर तो देखो मतलब ये तो पिज़्ज़ा खा रहे हैं, यहाँ पे तो ट्रॉलियों के अंदर एसी लगे हैं। तो इस तरीके से बदनाम किया गया किसान आंदोलन को। लेकिन वहाँ पे जब लोगों ने खुद अपने चैनल शुरू किए, लोगों ने खुद शुरू किया कि लोगों तक कैसे बात पहुँचाई जाए, तो दुनिया के अंदर से उनकी सपोर्ट करने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। तो चाहे कितना भी बड़ा मीडिया चैनल क्यों ना हो, चाहे वो आज तक जिसको सबसे ज़्यादा देखा जाता है, पर फिर भी लोग किसान आंदोलन की सपोर्ट कर रहे थे। बाहर के देशों से लोगों ने बोला कि नहीं, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो बहुत बिल्कुल सही कर रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग गलत नहीं हो सकते हैं। तो वहाँ पे मतलब जब आज तक जाता है, जी न्यूज़ जाता है, तो बड़ी संख्या में लोग विरोध करते हैं, गोदी मीडिया मुर्दाबाद करके उनको भगा दिया जाता है वहाँ से। तो कहीं ना कहीं लोगों को पता चलने लगा है कि ये हमारे हक की बात नहीं करते हैं। तो अगर मीडिया जो सच में उसको काम करना चाहिए तो वो मीडिया काम नहीं कर रहा है, तो जिस तरीके से अभी छोटे मोटे चैनल चल रहे हैं तो उनको ही चलने की ज़रूरत है और नए बनने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से मैं मिली जो छोटे मोटे चैनल चला रहे थे, जो सच में आवाज़ उठा रहे थे लोगों की, उनको बहुत तरीके का खतरा आता है, फिर उनके ऊपर जानलेवा हमला हो जाता है, गौरी लंकेश जैसे लोगों के ऊपर, या फिर आज़ाद पत्रकारों को यूएपीए तहत जेल के अंदर डाल दिया जाता है। जब मणिपुर जल रहा है लोग बोल देते हैं मीडिया वाले, तो उनके ऊपर अटैक हो जाता है। तो इस तरीके से लगातार उन लोगों के ऊपर अटैक हुआ जो रियल में ग्राउंड के अंदर जाके लोगों की बात कर रहे थे। तो मेरा जो मानना यही है कि जो मीडिया, जब ग्राउंड के अंदर से मीडिया तैयार होगी, जब गांव के अंदर से जाके वो रिपोर्टिंग करके लेके आएंगे, तभी कुछ आगे बढ़ सकता है। और हम लोगों को कभी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि जो टीवी के अंदर आने वाले चैनल बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। हम लोगों को उम्मीद रखनी चाहिए कि छोटे मोटे चैनल जो यूट्यूब चैनल बना के, फेसबुक चैनल बना के, इंस्टाग्राम पर, जब वो छोटे मोटे चैनल जो भी बना के, वो चाहे अखबार के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, हम लोग को उनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम लोग जो रियल, जो असलियत, जो आवाज़ है, उसको आगे हम लोग लेके आ पाएँ। बढ़िया। तो सफूरा और सुरूर, संक्षेप में अगर इस पर आप टिप्पणी करें, फिर उसके बाद हम लोग जरा साथियों से सवाल ले सकें। I strongly agree with Biraj about what he said, and the steps that he highlighted to overcome the media, which is the part of the problem. Nodeep was talking about, and we all want to, I think, in one sense, believe that alternate media can provide some solution to this problem. But I think it is a developing story, because when you look at the online space, it itself is so segregated, it is so hegemonized, that even in that space, it is difficult for what kind of things are going to come up.
and whether they come up. Secondly, the tech around which the online spaces are being built are increasingly compromised, as has been evident with the recent investigations, the most recent being about the Wire, and also how these tech giants, social media platforms are increasingly contributing towards the rise of authoritarian governments all through the world. So, to what extent, creating? I mean, there is a need of an alternate media, but is it possible to get that media on social media through online platforms? I feel is a question that needs to be discussed more. Secondly, just one or two things about civil society organizations, and Suroor talked about it, and I feel that there needs to be a shift from the online to the offline. We need to restart grassroots work. Historically, India is a country where जब भी चाहे आप नेता देखिए, चाहे आप मीडिया देखिए, चाहे आप सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को देखिए, जब भी हम लोगों ने ग्रास रूट्स में जाके लोगों से ग्राउंड पे कनेक्ट करने की कोशिश की है, तो इस कंट्री के लोगों ने हमेशा रिस्पॉन्ड किया है. दिस इज़ अ लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री. अनफॉर्चुनेटली we have invested our energies elsewhere. That has also led to a lot of hegemonization of this space. A lot of civil society, as Suroor was also talking about, serves from savior complex. In that sense, I feel that organic individuals, people from the grassroots, need to be provided with the resources and the framework to support them and build them up. Suroor, really brief comment, yeah? Just a couple of things. We must, again, I'm going back to this question that civil society groups have become radioactive. There's a reason for that, and that is so that voices of the margins do not make it to public spaces. So that you and I in our drawing rooms are not hearing about what is happening in a tribal village somewhere. And we're not listening to Dalit women being beaten up in Karnataka by a cop. So that's what they want us not to hear, because when we hear that, we have to ask the questions that need to be asked. So I think that let's recognize our privilege. Just because amnesty cannot work doesn't mean that you and I cannot go find those families or at least voice our opinions. Second, that on the media accountability, Biraj, I completely agree with you. I think that these are long-term and they're important measures. But in the interim, we have self-regulation within these media outlets. We need to activate those. We need to hold them accountable. Let's have criminal cases against them if they're lying on record. And see how it may not lead to anything today, but 5 years later, we may lead to some. All right. Thank you, Suroor. This has been really an interesting conversation. We're really short on time, so let's take 3 questions. I've recognized one here, one there. All right, sorry. So let's in the middle here. Yeah. Hello, my name is Aryam. So my question is that in this presentation, in this panel discussion, you have discussed that how government is persecuting civil society organizations and civic societies are shrinking. As well, one point was mentioned that India has become an electoral autocracy. So my question is that when, in fact, the point that the India has become an electoral autocracy is actually consensual by the people. 55% of people, according to Pew Research, support India transitioning into a dictatorship. And in that scenario, is it feasible that a few bunch of intellectuals in this crowd or in the panel, they discuss about how civic society is shrinking, when the real root of the problem is that people don't value civic society. Okay. They don't value your civil question society is clear. organization. Thank you. So, yeah.
हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ समीका राठौर, आई एम फ्रॉम के आर मंगलम यूनिवर्सिटी। मेरा सवाल सुरूर मैम से है कि अभी हाल ही में ईडी ने पूछताछ करी है अपोजिशन पार्टी के लोगों से और उसको लेकर भी बहुत सवाल उठे हैं और ये कहा गया है कि सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब न्यायपालिका या ईडी का ऐसी जांच एजेंसी से अगर कोई अपोजिशन पार्टी से पूछताछ होती है और जब वो ये इल्ज़ाम लगाती है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसका इन्वॉल्वमेंट है, तो आप क्या समझती हैं कि सिविल सोसाइटी पे इसका क्या असर पड़ता है? इन जांच एजेंसियों पर लोग भरोसा कर पाएंगे या नहीं? शुक्रिया। आप जी। Sir, in April this year, there was a constitutional conduct group that of formal bureaucrats and civil servants that wrote against the communal frenzy in India and appealed to the Modi government to at least issue a statement in this regard. We had a counter group of former bureaucrats and civil servants saying that this was another act and they were supporting the government. So in this regard, how do we resolve the paradox of I may not agree with what you say, but I will defend to death your right to say it? How do we reconcile that? Okay, so thank you. Let's start with Suroor because you had a specific question for you. Yes, thank you. I think that जहाँ तक investigative agencies का सवाल है, देखिए, again going back, a lot of our problems are structural and we'll have to address them as that. But I think one of the questions to ask is to follow the story to its end. कब कब किस किस को क्यों बुलाया जा रहा है ना? वो सवाल पूछिए तो आपको पता लगेगा कि वो एक इलेक्शन के दौरान हो रहा है या कोविड के बाद सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को क्यों टारगेट किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट का एक बैड नेम आ रहा था और गवर्नमेंट ने जो किया है वो सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में किया है, whether it is, but they take credit and that's how the media portrays it, but the truth of the matter is lying somewhere else. So I think that asking the question and taking that story forward is the responsibility of media and us to say कि यार उसको arrest क्यों नहीं किया अगर उसके पास पैसा मिला, and we have to acknowledge that corruption within political spaces exist. So opposition के पास पैसा है, बिल्कुल सही बात है, पर क्या पतंजलि के पास पैसा नहीं है? क्या बीजेपी का 40% का दावा करके पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में न्यूज़ चैनल्स में लोग आके कह रहे हैं कि हम 40% दे रहे हैं किसी गवर्नमेंट को, एंड नॉट अ सिंगल रेड हैज हैपेंड. दैट क्रिएट्स suspicion in the mind of the average person, and that has to be harnessed to ask the question, why isn't your agency working for you? Because these are your taxpayer money, these are public money that is being paid to further a political agenda. Thank you, Suroor. We're pretty much out of time, but just concluding, one line. So I think जो आपने कहा, डेमोक्रेसी और मेजॉरिटेरियनिज्म में बहुत बड़ा फर्क है. आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, दैट इज ओनली वन पार्ट ऑफ योर डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज एज अ सिटीजन. डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट द मेजॉरिटी. इट इज़ नॉट कि भाई 60% लोगों ने कहा कि तानाशाही होनी चाहिए तो हम तानाशाही करेंगे. अब देयर इज़ अ फ्रेमवर्क विच इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये आपका और हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है, हर नागरिक का फ़र्ज़ बनता है कि उस संविधान की रक्षा करना और धरोहर में अगली पीढ़ी को देना. सो आई थिंक दैट डिस्टिंक्शन नीड्स टू बी मेड. और concluding, if I had to say one thing, I would say let us all create a people's movement for an independent public broadcaster, which is, to, in my view, the only and only way where we can today redeem it. Or not too long back in our history, कुछ ही साल पहले हमने देखा जब सोमनाथ चैटर्जी was the speaker of the Lok Sabha and Hamid Ansari Saab was the vice president, how two channels, Lok Sabha TV and Raj Sabha TV, became very independent, even though they were part of the overall machinery of the state. They were operating very independently, and they crafted a completely new media space, which is now, of course, gone, for debate, for discussion, and so on. So we have an example from recent history. Let's try and work together, civil society, media, citizens, to create a truly independent public broadcaster, because that will give us the scale that we need to protect democracy. शुक्रिया बिराज, शुक्रिया सुरूर, शुक्रिया नवदीप, शुक्रिया सफूरा, और आप सबका भी शुक्रिया. थैंक यू.